Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we'll be having an interesting and a very important topic. It's very deep and there's a lot of literature behind this topic. So basically आज हम बात करेंगे about the chemical interactions or bonding in the polymers. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि I have already compiled all the polymer chemistry material in my series around 1 or 2 years before. So many times students asked me the question about this, that can you prepare the topic that is the chemical interactions or bonding in polymers in the concise manner. तो आज मैंने कोशिश की है, मैंने इसको एक नोट की शक्ल में बनाया हुआ है. एज यू नो कि ये टॉपिक बहुत ही डीप है और बहुत डाइवर्सड है. इसमें ऐसा कोई कंसाइज्ड मटेरियल अवेलेबल नहीं है. नीदर देयर आर बुक्स अवेलेबल, नीदर ऑनलाइन देयर इज एनी वीडियो अवेलेबल which discussed the chemical interactions in the concised manner. तो मैंने कोशिश की है इसको मैं to the point डिस्कस करूँ आपके सामने and in the form of note, and this note you can use for the exam purpose also. ठीक है, so let us begin. So chemical interaction or bonding in polymers. देखिए पॉलीमर्स के अंदर जो केमिकल इंट्रैक्शंस है उसकी वजह से पॉलीमर्स में प्रॉपर्टीज वैरी हो जाती है. As the properties vary, then accordingly its utility also varies. यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ, the physical property of polymers, they are important and they determine their usefulness. For example, use in the rubber tires, buildings, rocket fuels, etc. So depending on the various types of interactions, polymers have primary, secondary and tertiary structure. So depending on the interactions, polymers can have primary, secondary, tertiary structure. Primary structure simply means it is due to the covalent bonding between the individual atoms. किसी भी पॉलीमर में जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, मींस जो मोनोमर्स होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, दैट्स referred as the primary structure or primary bonding. Then secondary structure means when we have adjacent polymer chains, the interaction between the adjacent polymer chains, that gives rise to the secondary structure. And the tertiary structure means when many polymer chains they fold, they give rise to some sort of a three-dimensional structure. So जो many polymer chains के बीच में जो folding structure बन जाता है, then it actually is the tertiary structure. ये तो कुछ basics था. Now, as far as the bonding is concerned, there are two types of bonds: primary bonds and secondary bonds. Primary bonds can be divided into ionic, covalent, and metallic, and secondary bonds can be divided into dipole, hydrogen bond, induction forces, van der Waals, or dispersion forces. Let us discuss ionic bond. देखिए ionic bond, you know, I will not discuss this. Simply you know the sodium chloride example because this is a very basic example. Now we have the ions, and then when the ions are formed, cation and anion, then the force between them. Now if we talk about this in the polymers, ionic bonds are not so common in the polymer materials. However, divalent ions are known to act as cross links between the carbonyl in the natural resins. पॉलीमर्स में क्लास होता है नेचुरल रेजिन, जो प्लांट मटेरियल से ऑब्टेन होता है नेचुरल सोर्सेज से. वहां पे अगर आपका डाइवेलेंट केटाइन हो, दैट डाइवेलेंट केटाइन कैन पार्टिसिपेट इन द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन विद द कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप. फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक पॉलीमर का कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये दूसरे पॉलीमर का कार्बोक्सिल ग्रुप है, एंड इन दिस ग्रुप वी नो दैट दिस इज पोलराइज्ड CO बॉन्ड. जब आपका डाइवेलेंट केटाइन प्रेजेंट हो, दिस वाज जिंक 2+. So under the presence of zinc 2+, you just CO double bond था, एक बॉन्ड इधर चला गया. Now this is basically, ये जो बॉन्ड आपका है, now this becomes the ionic bond because it's purely interaction between this cation and the anion. तो इस तरह के बॉन्ड्स पॉलीमर्स में होते ही, ठीक है ना. Now this type of bonds, these type of polymers where we have the ionic bond, that is called the ionomers. Now this information is more than enough as far as the basics is concerned. उसके बाद में जो bond होता है, that's the covalent bond. Now covalent bond, you know, the mutual sharing of electrons, or in the modern terminologies, as per the molecular orbital theory, it's simply the overlap between the orbitals. For example, this is oxygen, one of the orbitals of oxygen overlaps with the hydrogen valence orbital, and on the other side also valence orbital, so this forms the covalent bond, water molecule. Now let's look at the polymers. This is the predominant bond in the polymers. Depending on the type of covalent bond, whether it is single or double or triple,
in the polymers. Accordingly, the polymers will have the bond dissociation energy, and if the bond dissociation energy is more, then accordingly the thermal stability of polymers will be more. तो polymer की thermal stability डिपेंड करती है इसमें सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं. अगर डबल बॉन्ड ज़्यादा है या ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है, देन अकॉर्डिंगली इसके जो है स्टेबिलिटी विल बी मोर. सो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस इज मोस्ट डोमिनेंट बॉन्ड इन द पॉलीमर्स. जैसे आप देखते हो अल्कीन मॉलिक्यूल, इथरीन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन के बीच में जो सी बॉन्ड्स होते हैं, CH बॉन्ड्स होते हैं, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C. सो दिस इज बेसिकली द मेन बॉन्ड इन द पॉलीमर्स. ठीक है. एंड देन वी हैव अनदर फोर्स दैट्स कॉल्ड डिस्पर्शन फोर्स. तो लेट्स सी डिस्पर्शन फोर्स. मॉलिक्यूल्स, डिस्पर्शन फोर्स में मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल but they have a permanent dipole moment, and if the centers are positive and negative charge do not coincide, then this force arises if the electrons shared by the two atoms spend more time on one of the atoms due to the difference in the electronegativity. देखिए, this is the example. Normally क्या होता है कि the molecule is electrically neutral, लेकिन if there is dipole structure in the molecule, देखिए, if there is a dipole in the molecule, and in that dipole case what happens that the charges, electrons, they spend more time on one side, or they spend more time on the one side of the atom, so that gives rise to this dipole, and then these are individual dipoles, the interaction arises called dipole interaction. अब हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, ये अब पॉलीमर है, एक पॉलीमर, फॉर एग्जाम्पल ये एक एस्टर टाइप पॉलीमर है. We know that it contains CO bond. CO is a polar bond, so carbon is a delta plus, oxygen delta negative. तो दूसरी चेन में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है. So what happens, these when they are arranged in this fashion that this positive center is to and this negative center is oriented in this direction, ये जो force arise है, it's called dipole force. या आप ऐसे देख सकते हो, अगर पॉलीमर में आपका नाइट्राइल ग्रुप है, CN bond is polarized, तो N is negative, delta negative, C is delta positive. जो दूसरी चेन है, nitrogen can interact with the positive carbon of the next chain, and the nitrogen can interact with the carbon. इनके बीच में जो फोर्स है, दिस इज डाइपोल फोर्स. ठीक है. नाउ सच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. ये इंपॉर्टेंट, ये जो डाइपोल इंटरेक्शंस है, ये होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट. सो अगर टेम्परेचर ज्यादा है, दे कैन गेट वीकेंड, एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टेरिशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. तो जो प्रोटीन्स या जो पॉलीमर्स होते हैं, बिकॉज पॉलीमर्स, प्रोटीन्स आर आल्सो सम सॉर्ट ऑफ पॉलीमर्स. तो पॉलीमर्स जो होते हैं, उनमें जो टेरिशरी स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल, उनके बीच में जो फोर्स होता है, दैट इज बेसिकली द डाइपोल फोर्स. ठीक है. देन देयर इज अनदर फोर्स कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आई नीड नॉट टू अंडरस्टैंड दिस, जस्ट वी नो द वाटर मॉलिक्यूल. इट हैज द partial positive charge on the oxygen, then partial negative charge on the oxygen, and then partial positive charge on these hydrogen atoms. So जो आपका एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑफ इट कैन इंटरेक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ नेक्स्ट. ऐसे ही इसमें क्लस्टर बन जाता है. So this is your हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ अगर पॉलीमर्स की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेडली स्ट्रॉन्गर दैन डाइपोल फोर्स. ये फोर्स होते हैं डाइपोल फोर्स से स्ट्रॉन्गर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व होता है. इन पॉलीमर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूजुअली ऑकर्स बिटवीन द फ्रैक्शनल ग्रुप्स इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. द हाइड्रोजन इज जनरली अ पार्ट ऑफ सच ग्रुप्स सच एज कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, यानी इस तरह की ग्रुप्स जिन पॉलीमर में हो, तो उनमें हाइड्रोजन इनका पार्ट होता है. while the other hydrogen in the hydrogen bonds, it's frequently attached to oxygen. और पॉलीमर जैसे कार्बोनिल्स, ईथर्स, हाइड्रोक्सिल्स, इस तरह से एमीन्स में भी होता है ऐसा हाइड्रोजन जो पोलराइजर होता है. सो वहां पे ये बॉन्ड एग्जिस्ट होता है. सो द हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेज अ वाइटल रोल इन द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, पर्टिकुलरली प्रोटीन्स. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका आप ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट देख सकते हैं प्रोटीन्स में. ठीक है. एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की है नाइलन 6-6. ये एक चेन है, नाइलन की है नेक्स्ट चेन. ये देख सकते हो, दिस इज CO, ऑक्सीजन इज डेल्टा प्लस, और दूसरे चेन का NH. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है. हाइड्रोजन का अटैच्ड होना टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, और अटैच्ड टू द ऑक्सीजन, और अटैच्ड टू द कार्बोनिल, इस तरह के बॉन्ड्स, सॉरी अटैच्ड टू द कार्बोक्सिल. तो यहाँ पे देखते हैं NH और ये ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज नाइलन 6-6 एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीमर्स. आपसे याद रख सकते हैं. उसके बाद में एक फोर्स है कॉल्ड द इंडक्शन फोर्स. एवरी डाइपोल हैज, देखिए इंडक्शन फोर्स नॉर्मली क्या होता है, एज द वर्ड सेज इट्स इंड्यूस्ड. ये होता नहीं नॉर्मली, बट इट गेट्स इंड्यूस्ड. नॉर्मली every dipole has an electric field associated. The electric field is capable of inducing relative displacement of electrons in the neighboring nuclei.
तो यहाँ पे क्या होता है, एक डाइपोल क्या करता है, वो नीबरिंग न्यूक्लियस में इंड्यूस करता है डाइपोल। ऐसे केस में एक फोर्स अराइज होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल, दैट्स कॉल्ड इंडक्शन फोर्स। ये देखिए, ये एक न्यूक्लियस है, एक पॉजिटिव सेंटर है, ये एक मॉलिक्यूल है। ये इस न्यूक्लियस के सेंटर में ये जो इसके नेगेटिव चार्जेस है, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। इसकी वजह से क्या होता है, डाइपोल जनरेट होता है इस मॉलिक्यूल में। सो अपॉन द अप्रोच ऑफ चार्ज्ड आयन, इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम रेस्पॉन्ड एंड द एटम डेवलप्स डायपोल। तो एटम्स या मॉलिक्यूल में डाइपोल डेवलप होता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एंटिटी, एक्सटर्नल चार्ज। तो ये जो डाइपोल है, इसमें आप ये कह सकते हो कि इस तरह से पोलराइजेबिलिटी आ जाती है मॉलिक्यूल्स में। ना ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल एंड इन केस ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री इट इज नॉट दैट मच डोमिनेंट। तो डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस जो है ये इतनी ज्यादा डोमिनेंट नहीं है पॉलीमर केमिस्ट्री में। मैंने बड़ी ट्राई की है इसको ढूंढने की, आई गेट सम एग्जांपल, a simple example for you purpose, but it was difficult. But I suppose you can skip this, but just understand actually the induced force, which is induced due to presence of some external charged moiety, and that actually polarizes the molecules. ठीक है, इसके बीच में आपका important force है polymers में, that's the van der Waals force. This is also called the dispersion force. अब ये भी आप जानते हैं its definition, but I will discuss it. Normally inert gases में they are incapable of forming any type of bonds. Q? Because they're inert, they're stable, they have the complete octet, outermost shell is complete. Although they are inert gases, but they do, they do participate in the bonding called as the van der Waals force. तो van der Waals force आप यूँ समझ लीजिए, basically whenever you have the, जितना किसी के पास मास ज़्यादा हो, एटम उसका मास साइज ज़्यादा होता है, तो van der Waals force increases. So let's read this para. Electrons are usually in constant motion about the nuclei in ये जो एटम्स है van der Waals, ये जो आपके inert gases है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन कांस्टेंट मोशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट्स सेंटर। कभी ऐसा होता है कि इनकी रोटेशन, इनकी मोशन के दौरान देयर सेंटर ऑफ द चार्जेस, the center of the negative charge of the electron cloud may not coincide the nucleus. Sometimes they lose their stability, they go one-sided. इसमें polarity develop हो जाती है. Consequently, a fluctuating dipole gets developed. If the orientation of fluctuating dipoles, they are properly alignment, the intermolecular force occurs. So the attractive force are referred as van der Waals force or dispersion force, and they are present in all molecules, और इस तरह से polymers में भी. You can understand this in the polymers. जैसे आप देख सकते हो, ये एक पॉलीमर्स का एक झुंड है, इसको क्रिस्टलाइट बोलते हैं। इसकी वजह से पॉलीमर्स में क्रिस्टलिनिटी आती है। फॉर एग्जांपल, फोर्स बिटवीन द चेन्स इन द क्रिस्टलाइट्स, ये क्रिस्टलाइट्स है, ये आप देख सकते हो। ये जो चेन्स है, इनके बीच में जो फोर्स है, दैट इज योर van der Waals फोर्स। ठीक है, सो द सेम फोर्स एग्जिस्ट्स इन द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड स्टेट और इवन इन द वेपर स्टेट। इवन दो वेपर स्टेट्स में फोर्स कम होता है, लेकिन उसमें भी van der Waals फोर्स हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और सॉलिड स्टेट में ये तो फोर्स होता है। तो क्रिस्टलाइट्स में द फोर्स बिटवीन द चेंज इन द क्रिस्टलाइट्स ऑफ द पॉलीमर आर कॉल्ड द van der Waals फोर्सेस। इसको आप अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो, देखिए ये CH2 तो कॉमन मोइटी है पॉलीमर्स में, तो एक चेन में जो CH2 है, दूसरे चेन में जो CH2, तो CH2 चेन में एक वीक फोर्स होता है, उसी को बोला जाता है van der Waals फोर्स। यही वो फोर्स होता है जो इन चेन्स के बीच में होता है क्रिस्टलाइट्स में। This is what is written here, the force between the chains in the crystallites of a polyethylene molecule. This is crystallite, these regions. Now, इसमें जो chains है, इनके बीच में जो force है, this is basically between CH2 groups in the polyethylene. So this is your example of the force called as the van der Waals force. So these were the some of the basics of the forces or bonding in the polymers. Believe me, there is no such material in the concise manner available anywhere in the text and anywhere where you can get this topic. So I have tried my best to have the basic concept. At least we can attempt the exams. We can have some basic understanding that polymers में ये interactions कैसे होती है. So this is all for the day. Thank you.